तो पिलामाने आज आम भिडियो रे NEET नीट यूजी परीक्षा पाई प्रदान करा कोर्स सिलेबस को आलोचना करवा जो थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलोजी को नहीं परीक्षा होची हायर सेकेंडरी स्टेज रो सिलेबस पड़ुची। तो फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MBBS और BDS और BAMS और BSMS और BUMS और BHMS कोर्सेस अक्रॉस द कंट्री एथि सिलेबस यही सब कोर्स रे नाम लिखाई पारिबा MBBS BDS BAMS BSMS BUMS BHMS कोर्स पाई। तेणु कौन रही है सिलेबस देखा द नेशनल मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया recommend the following syllabus for national eligibility come entrance test for admission to MBBS or BDS or BAMS or BSMS or BUMS or BHMS courses across the country after review of various state syllabi as well as those prepared by CBSE, NCERT and COBSE. This is to establish to uniform across the country keeping in view the relevance of different area in medical education. ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ର ସିଲାବସ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ସିଲାବସ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର कंट्री समस्त पिलाने आम देशर समस्त पिलाने जो भाव भल भाव परीक्षा दे पारे। तेणु फिजिक्स सिलेबस जो देखा क्लास 11 टॉपिक अच्छी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर थर्मोडायनामिक्स बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑसिलेशन एंड वेव्स एवं 12th क्लास टॉपिक अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एटम्स एंड न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो केमिस्ट्री देखा 11th क्लास कौन सब टॉपिक अच्छी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम रिडक्स रिएक्शन हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल सम P ब्लॉक एलिमेंट एवं 12th क्लास जो देखा चैप्टर अच्छी सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स सरफेस केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट P ब्लॉक एलिमेंट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हालो अल्केन हालो आरेन अल्कोहल फिनोल एंड इथर एवं आहरी केमिस्ट्री किसी पार्ट रही जाए 11th क्लास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक हाइड्रोकार्बन्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और 12th क्लास पार्ट रहा आल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बायोलॉजी जो देखा 11th क्लास पार्ट रहा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी एवं 12th क्लास पार्ट रहा रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लिकेशन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो पिलाने आम बर्तमान डिटेल सिलेबस को आलोचना करवा देखा फिजिक्स कौन डिटेल सिलेबस रही फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट नेचर ऑफ फिजिकल लॉज फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी नीड फॉर मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट बहुत इंपोर्टेंट पे परीक्षा पड़े फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एरर इन इंस्ट्रूमेंट सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगरटा भल भाव बुझे और भल भाव पढ़ पे समस्ते निजर टेक्स्ट बुक पढ़ा सहित NCERT बही को भल भाव पढ़ सब क्वेश्चन आंसर तुम कर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एंड डायमेंशन किसी क्वेश्चन पड़े डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लिकेशन काइनेमेटिक्स तुम आसला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पोजिशन टाइम ग्राफ এটা बहुत इंपोर्टेंट पोजिशन टाइम ग्राफटा स्पीड एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन এটা तुम पर परीक्षा बहुत सारा प्रोब्लेम पड़े वेलोसिटी टाइम एंड पोजिशन टाइम ग्राफ गुड़ा पे भल भाव देख एंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ग्राफिकल ट्रीटमेंट एलिमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट जनरल वेक्टर एंड नोटेशन इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्केलर वेक्टर बहुत इंपोर्टेंट पे वेक्टर पार्ट भल कि देख वेक्टर्स बाय रियल नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी तापर आसला यूनिट वेक्टर्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मोशन इन ए प्लेन केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन तो केसेस गुड़ी भल भाव देखी जिते केस देती बही सब से केस गुड़ी को भल भाव पढ़ प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम बहुत सारा क्वेश्चन प्रोब्लेम गुड़ा पड़े न्यूमेरिकल्स गुड़ा तेणु तुम जो बही भी पढ़ुच भल भाव पढ़ और जोटा जोटा इंपोर्टेंट कहूँ से भल भाव पढ़ निश्चय से तुम बहुत सारा क्वेश्चन पाई लॉज ऑफ मोशन इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आम लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपोर्टेंट पे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपल्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लिकेशन तेणु ये आम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ को बेस कर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा पड़ो तापर आम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को देखा पड़ो तार कौन एप्लिकेशन रही इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन लुब्रिकेशन डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्सेस एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन वेहिकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड वेहिकल ऑन बैंक रोड तो ये विशेषकर आम न्यूमेरिकल सब पड़े तेणु तुम भल भाव न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा पड़ो NCERT
टेक्स्ट बुक देइथिबा न्यूमेरिकल्स करो एवं तुमर स्टेट बोर्ड द्वारा जो बही गुडी प्रचलित अच्छी जो गुडी रेकग्नाइज्ड बुक गुडी तुम फॉलो करि परिबो। वर्क एनर्जी एंड पावर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम पावर नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy kinetic and potential energy non conservative forces motion in a vertical circle elastic and inelastic collision in 1 and 2 dimension एटा बहुत इंपोर्टेंट पिला नै लास्ट पार्टा motion in a vertical circle elastic and inelastic collision in 1 and 2 dimension तापर आसिला motion of system of particles and rigid body center of mass of a two particle system momentum conservation and center of mass motion center of mass of a rigid body center of mass of uniform rod ए कंडीशन गुडा सब देखिया पड़िबो moment of a force torque angular momentum conservation of angular momentum with some example equilibrium of rigid body rotation and equation of rotational motion comparison of linear and rotational motion moment of inertia radius of gyration value of mi for simple geometrical objects एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट statement of parallel and perpendicular axis theorem and their application तेणु युड़िक सब पढ़ा पड़ो तापर ग्राविटेशन केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्राविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ तेणु केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन बहुत इंपोर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्राविटेशन इंपोर्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राविटेशनल पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट तापर आसला प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इलास्टिक बिहेवियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हुक्स लॉ यंग्स मॉडुलस बहुत इंपोर्टेंट ये मॉडुलस गुड़िक अच्छी यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पॉइसन्स रेशियो ये बहुत सारा प्रॉब्लम पड़े इलास्टिक एनर्जी विस्कोसिटी स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपोर्टेंट स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी बर्नौलीज थ्योरम गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लिकेशन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन angle of contact excess of pressure application of surface tension ideas to drop bubbles and capillary rising concept मते भलो भाबरे तुम पढिया पडिबो बर्नौलीज थ्योरम पर आधारित heat temperature thermal expansion of solid liquid and gases anomalous expansion specific heat capacity CPCV calorimetry change of state of latent heat एटा भलो भाबरे पडिबो heat transfer conduction and thermal conductivity convection and radiation qualitative idea of black body radiation भलो भाबरे पडिबो winds displacement law and greenhouse effect newton's law of cooling and Stephen's law न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपोर्टेंट कांसेप्ट थर्मोडायनामिक्स आसीबा थर्मोडायनामिक्स रे थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो दीटा लॉ भलो भाबरे पढ़ो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हीट इंजिन केमती काम करूची और रेफ्रिजरेटर केमती कांसेप्ट तार सब भलो भाबरे बुझ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम केमिस्ट्री अच्छी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ ए परफेक्ट गैस वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग ऑफ ए गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अजम्पशन कांसेप्ट ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम टा बहुत इंपोर्टेंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड एप्लिकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस कांसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ तापर आसला ऑसिलेशन एंड वेव्स पीरियोडिक मोशन periodic frequency displacement as a function of time periodic function simple harmonic motion এটা একটা important concept simple harmonic motion উপরে বহুত সারা কোশ্চেন পড়ে and its equation phase oscillation of a spring restoring force and force constant energy in SHM kinetic and potential energy simple pendulum derivation of expression for its time period free forced and damp oscillation qualitative idea only resonance এই resonance টা একটা important concept তা ଗୋଟେ ଦେଖିବ wave motion longitudinal and transverse waves speed of wave motion displacement relation for a progressive wave principle of superposition of waves reflection of waves standing waves in spring and organ pipe fundamental mode of harmonic beat doppler effect ଗୋଟେ important concept এটা ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ electrostatic ଆସିଲା second year part ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା syllabus ର electric charges and its conservation coulomb's law of forces between two point charges এই condition ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ forces between two point charges forces between multiple charges superposition principle and continuous charge distribution electric field due to a point charge electric field line electric field due to a dipole torque on a dipole in a uniform electric field electric flux statement of Gauss theorem and its application Gauss theorem और तार application टा बहुत important to find field due to infinitely long straight wire ये जो condition सब अच्छी case उड़ा ये जो point उड़ा अच्छी ये Gauss theorem and its application to find field due to infinitely long straight wire uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical cell field inside and outside এটা হচ্ছে important ভালো ভাবে দেখো electric potential difference electric potential due to a point charge a dipole and a system of charge equipotential surface electric potential energy of a system of 2 point charges and of electric dipole in electrostatic field conductor and insulator free charges and bound charges inside a conductor dielectric and electric polarization capacitor and capacitance combination of capacitor in series and in parallel এটা important
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आसे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर भैन डायग्राफ जनरेटर तापर असला करंट और इलेक्ट्रिसिटी ये पार्ट गुड़ा पिलाने बहुत इंपोर्टेंट भल कि पढ़ तार कॉन्सेप्ट गुड़ा भल कि क्लियर कर और जहाँ भी तुम पढ़ुच तार न्यूमेरिकल संगे संगे प्रैक्टिस कर ताले तुम पाठपढ़ाटा 100% सक्सेसफुल हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए मेटालिक कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपोर्टेंट एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ रो कॉन्सेप्ट बहुत इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस VI कैरेक्टरिस्टिक लिनियर एंड नॉन लिनियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कार्बन रजिस्टर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर कौन सब कलर कोड रही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत इंपोर्टेंट ऑफ ए सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर जमी कॉम्बिनेशन पड़े सीरीज और पैरेलल सेमती सेल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोब्लेम पड़े किर्चॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज जोड़ा ब्रिज दीटा बहुत इंपोर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज किर्चॉफ्स लॉ इंपोर्टेंट पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म concept of magnetic field Oersted experiment Biot-Savart's law बहुत इंपोर्टेंट Biot-Savart's law and its application to current carrying circular loop Ampere's law and its application जिते सब law अच्छी पिला माने तो भल भाव पढ़ एवं तार जो application अच्छी ताकू देखो Ampere's law and its application to infinitely long straight wire straight and toroidal solenoid force on a moving charge in uniform magnetic field এটা बहुत इंपोर्टेंट force on a moving charge in uniform magnetic and electric field बहुत इंपोर्टेंट cyclotron force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field এটা बहुत इंपोर्टेंट force between two parallel current carrying conductor definition of ampere torque experienced by a current loop in a magnetic field moving coil galvanometer its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment of a revolving electron magnetic field intensity due to a magnetic dipole or bar magnet along its axis and magnet as an equivalent solenoid magnetic field lines Earth's magnetic field and magnetic element para di and ferromagnetic substance इधर बहुत सारा क्वेश्चन पड़े with example electromagnetic and factors affecting their strength permanent magnet electromagnetic induction and alternating current it is important chapter electromagnetic induction Faraday's law induced EMF and current Lenz's law eddy current self and mutual inductance alternating current peaks and RMS value of alternating current or voltage reaction and impedance LC oscillation qualitative treatment only LCR series circuit resonance power it is सब important in AC circuit Wallace current AC generator and transformer में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े electromagnetic waves need for displacement of current electromagnetic waves and their characteristic transverse nature of electromagnetic waves electromagnetic spectrum radio waves microwaves infrared visible ultraviolet x-ray gamma ray including elementary fact about their uses optics कौन कौन सब अच्छी देखिबा reflection of light spherical mirror formula refraction of light total internal reflection and its application optical fiber refraction at spherical surface optics मध्ये बहुत सारा प्रॉब्लम पड़े lenses thin lens formula lens maker formula magnification power of lens combination of thin lenses in contact a combination of a lens and a mirror refraction and dispersion of light through a prism scattering of light blue color of the sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset optical instrument ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା human eye image formation and accommodation correction of eye defect myopia and hypermetropia ये जो डिजीज जोड़ा अच्छे सब जोटा कि आय रे हुए यूजिंग लेंसेस माइक्रोस्कोप and astronomical telescope reflecting and refracting and their magnetic power wave optics wavefront and Huygens principle reflection and reflection of plane wave at a plane surface using wavefront proof of law of reflection and refraction using Huygens principle interference Young's double slit hole experiment and expression for fringe width it is an important concept coherence sources and sustained interference of light diffraction due to a single slit width of central maximum a resolving power of microscope and astronomical telescope polarization plane polarized light Brewster's law use of plane polarized light and polarities तापर असला dual nature of matter and radiation photoelectric effect Hertz and Lennard's observation Einstein photoelectric equation बहुत important এটা ভালো ভাবে পড়িব particle nature of light matter waves wave nature of particle de Broglie relation Davison Gamer experiment experimental details should be omitted only conclusion should be explained atoms and nuclei alpha particle scattering experiment Rutherford's model of atom एटा सब chemistry मते तुम पाइजिबो तेणु गोटे जगह पढ़िले दी आडू पाइबो chemistry physics बहुत में पाइबो Bohr's model energy level of hydrogen spectrum composition and size of nucleus atomic masses isotopes isobar isoton radioactivity alpha beta and gamma particle rays and their properties decay law mass energy relation mass defect binding energy per nucleon and its variation with mass number nuclear fission and fusion electronic devices energy band in solid qualitative idea only conductor insulator and semiconductor এটা আমাদের important semiconductor diode IV characteristic in forward and reverse bias diode as a rectifier IV characteristic of LED photodiode solar cell and general diode
General diagram ମଧ୍ୟ ବହୁତ important ପିଲାମାନେ as a voltage regulator, junction transistor, transistor action, characteristic of a transistor, transistor as a amplifier, transistor as a amplifier ଟା ମଧ୍ୟ important, common emitter configuration and oscillator, logic gate, ଏ logic gate ରୁ କିଛିଟା question ପଡ଼େ or and not, NAND and NOR, transistor as a switch। ତାପରେ ଆସିଲା chemistry ର 11th class ର syllabus, some basic concept of chemistry, general introduction, important scope of chemistry, laws of chemical combination, chemistry ମଧ୍ୟ ସବୁ law ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ important, Dalton's atomic theory, concept of element, atoms and molecule, atomic and molecular masses, mole concept and molar mass, percentage composition and empirical and molecular formula। तो ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ percentage composition ରହିଛି ଆମର empirical ଆଉ molecular formula ମଧ୍ୟ ବହୁତ important, chemical reaction, stoichiometry and calculation based on stoichiometry, stoichiometry calculation ବହୁତ ସାରା objective ପଡ଼େ, structure of atom, atomic number, isotopes and isobar, concept of cells and subcell, dual nature of matter and light, de Broglie's relationship, এটা ବହୁତ important, Heisenberg's uncertainty principle, concept of orbital, quantum number, shapes of s, p and d orbital, rules for filling electrons in orbitals, Haber principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbital, classification of elements and periodicity in properties, modern periodic law and long form of periodic table, periodic trend in properties of elements, atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, এটা ବହୁତ important ପିଲାମାନେ, electronegativity valence, chemical bonding and molecular structure, valence electrons, ionic bond, covalent bond, ଏ bonding ଟା ବହୁତ ଗୋଟେ chemical bonding ଗୋଟେ important chapter, ବହୁତ ସାରା question ଏଇଥିରୁ ଆସେ, bond parameter, Lewis structure, polar character of covalent bond, valence bond theory ଗୋଟେ important concept, resonance geometry of molecule, VSEPR theory बहुत important, concept of hybridization involving s, p and d orbital and shapes of some simple molecule, molecular orbital theory, MOT of VBT এটা ବହୁତ important of homonuclear diatomic molecule, hydrogen bond। ତାପରେ ଆସିଲା states of matter, gases and liquids, 3 states of matter, intermolecular interaction, types of bonding, melting and boiling point ବହୁତ important ପିଲାମାନେ, melting and boiling point, role of gas, laws of elucidating the concept of the molecule, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, ideal behavior of gases, empirical derivation of gas, equation, Avogadro's number, ये सब law गुड़िक बहुत important, ideal gas equation, kinetic energy and molecular speed, elementary idea, deviation from ideal behavior, liquefaction of gases, critical temperature, liquid state ଆସିଲା vapor pressure, viscosity and surface tension, qualitative idea only, no mathematical derivation। ସେ ଖାଲି କହୁଛି qualitative idea ଟା ଜାଣ, mathematical derivation ଦରକାର ନାହିଁ। thermodynamics ଆମର physics ରେ ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ସେ ସେମ୍ ପାଠଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଡାଇନାମିକ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଲ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଲି ଚାର୍ଟେଲେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆୟୋନିକ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେସେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିବେସିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ pH, ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ, ବଫର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ହେଣ୍ଡରସନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଫର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ, କମନ୍ ଆୟନ୍ ଇଫେକ୍ଟ এটা ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ, ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, concept of oxidation and reduction reaction, oxidation number, ये oxidation number बहुत important, balancing reduction reaction in terms of loss and gain of electron and charges in oxidation number, hydrogen ଆସିଲା occurrence, isotope, preparation, properties and usage of hydrogen, hydridicionic, covalent and interstitial, physical and chemical properties, water, heavy water, hydrogen peroxide preparation, এটা बहुत important, hydrogen peroxide preparation, reaction, usage and structure। ତାପରେ ଆସିଲା S block element, ଯୋଉଥିରେ କି alkali and alkaline earth metal ଯାଉଛି, group 1 group 2 element, ତାର general introduction, electronic configuration, occurrence, anomalous properties of the first element of each group, diagonal relationship, trend in the variation of properties such as ionization and enthalpy, atomic and ionic radii, trends in chemical reactivity with oxygen, water, hydrogen and halogen usage, preparation and properties of some important compounds, sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate, biological importance of sodium and potassium, industrial use of lime and limestone, ये सब ଆମର preparation ଗୁଡ଼ା ବହୁତ important, ଏ preparation ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼େ, biological importance of magnesium and calcium, some P block element, general introduction to P block element, group 13 element ଆମର ରହୁଛି, general introduction, electronic configuration, occurrence, variation and properties, oxidation state, trends in chemical reactivity, anomalous properties of first element of the group, ସେଟା ସେମ୍ ପୁରା କପି କରିଦିଆଯାଇଛି ସିଲାବସଟା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋରନ୍, some important compound, borax, boric acid, boron hydride, aluminium uses reaction with acid and alkali, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ important, aluminiumର ଯୋଉ usage ଅଛି, reaction with acid and alkali, group 14 element, general introduction, electronic configuration, occurrence, variation property, oxidation state, trend in chemical reactivity, anomalous behavior of first element, carbon allotropic form, physical and chemical properties, usage of some important compound, oxides, important compound of silicon and a few usage, silicon tetrachloride, silicon, silicate and zeolite, their use, organic chemistry is some basic principle and chemistry, and विशेष करी organic chemistry IUPAC nomenclature, electronic displacement in a covalent bond, inductive effect, electromagnetic effect, reaction order सब important, resonance and hyperconjugation, homolytic and heterolytic fission of a covalent bond, free radical, carbocation, carbon ion, electrophilic and nucleophiles, types of organic reaction, तापर इसला hydrocarbons, alkanes, alkane isomerism, their physical property, chemical reaction including free radical mechanism, halogenation, combustion and
ପାଇରୋଲିସିସ୍। ଆଲକେନ୍ର ଆସିଲା Alkane ଆସିଲା nomenclature, structure of double bond, ethane, geometrical isomerism, physical property, method of preparation, chemical reaction, addition of hydrogen, halogen, water, hydrogen halide। এই রিয়াকশন গুলো সব দরকার। Markovnikov's addition and peroxide effect, ozonolysis, oxidation, mechanism of electrophilic addition। Alkyne ର nomenclature, structure of triple bond, ethene, physical property, method of preparation, chemical reaction, acidic character of alkynes, addition reaction of hydrogen, halogen, hydrogen halides and water। Aromatic hydrogen ର introduction, IUPAC nomenclature, benzene, resonance, aromaticity, chemical property, mechanism of electrophilic substitution, nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation। এই reaction সবগুলো important। And alkylation, directive influence of functional group in mono-substituted benzene, carcinogenicity and toxicity। তারপর আসলে environmental chemistry। environmental chemistry ଆମର environmental pollution ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାଉଛି, air pollution, water pollution, soil pollution, chemical reaction in atmosphere, smog, major atmospheric pollutant, acid rain, ozone and its reaction, effect of depletion of ozone layer, greenhouse effect and global warming pollution due to industrial process, green chemistry as an alternative tool for reduction pollution, strategy for control of environmental pollution। তারপরে second year chemistry, solid state। solid state মধ্যে বহুত important chapter, classification of solid based on different binding forces, molecular, ionic, covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solid, unit cell in 2-dimensional and 3-dimensional lattices, calculation of density of unit cell, packaging in solid, packing efficiency, Boyd's number of atoms per unit cell in a cubic unit cell, point effect, electric and magnetic property, band theory of metal, conduction, semiconductor and insulator। solution asila, types of solution, expression of concentration of solution of solid in liquid, solubility of gases in liquid, solid solution, colligative property, relative lowering of vapor pressure, Raoult's law, elevation of boiling point, depression of freezing point, এটা important সব, elevation of boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative property, abnormal molecular mass, Mann-Hunt vector। electrochemistry, redox reaction, conduction in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, Kirchhoff's law, both important, electrolysis and laws of electrolysis, dry cell, electrolytic cell and galvanic cell, lead accumulator, EMF of a cell, standard electrode potential, relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, fuel cell corrosion। chemical kinetics, chemical kinetics, rate of reaction, factors affecting rate of reaction, concentration, temperature, catalyst, order and molecular type reaction, rate, law of and the specific rate constant, integrated rate equation and half-life period, concept of collision theory, both important, Arrhenius equation। surface chemistry, adsorption, physioadsorption and chemoadsorption, factors affecting adsorption of gases and solid, catalysis, homogeneous and heterogeneous activity and selectivity, enzyme catalysis, colloidal state, distinction between true solution, colloid and suspension, lyophilic, এটা বহুত important সব। colloids, properties of colloid, Tintal effect, Brownian movement, electrophoresis, coagulation, emulsion and types of emulsion। তারপরে আসলে general principle and process of isolation of element। তারপরে p block element রে group 15, 16 আর 17 element যাଉଛି, 18 ର। তারপরে d and f block element ଆସିଲା। তারপরে coordination compound ଆଉ halo alkanes and halo arenes। ତ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି physical ଆଉ organic chemistry cover କରିଦେଇ ପାରିବା, ତ inorganic partଟାକୁ ଏତେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବା, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ତାପରେ alcohol, phenol and ether, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ରହିଛି ତା nomenclature ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। aldehyde, ketone and carboxylic acid, organic compound containing nitrogen, amines, cyanides and isocyanide, diazonium salt, biomolecules, ये तो ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ବାୟୋଲୋଜିର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ, structural organization in animal and plant, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାପ୍ଟରଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜେଇର ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି, ଏଇତକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଜେନେଟିକ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାର, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଏତିକି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଲେ ବାକି ତକ ନ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ। ତ ଏଇତକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଫର୍ NEET UG ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍।